Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. The lesson Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom is actually a passage from the autobiography of Nelson Mandela. Nelson Mandela was a great hero who gave freedom to the blacks in South Africa. He was born on 18th July 1918 in the year 1918. He fought against the apartheid regime of South Africa, which believed in racialism. He spent more than 30 years in South Africa's prisons. He became the first black president of South Africa. This passage forms a part of the autobiography of Nelson Mandela titled Long Walk to Freedom. It is a saga of the glorious struggle that the blacks of South Africa waged against the apartheid regime to gain freedom. Let's start the story. This lesson pays tribute to those black heroes and patriots who waged a relentless struggle against the apartheid or the racist regime of South Africa. The story starts with the inauguration ceremony of the first non-racial government which was held in the Union Buildings in Pretoria. It was 10th of May 1994. The day was bright and clear. The inauguration ceremony of the first non-racial government was held at the lovely amphitheatre in the Union Buildings of Pretoria. It was the largest gathering of international leaders on South African soil. Politicians and dignitaries from more than 140 countries attended the ceremony. First of all, Mr. De Klerk was sworn in as second deputy president. Then, Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. Then came Mandela's turn. He was sworn in as the first black president of South Africa. So आप लोग देख सकते हो ये this is actually an autobiography Nelson Mandela की, and Nelson Mandela was born on 18 July in the year 1918, and this passage starts from कहाँ से शुरू हो रहा है? His sworning in ceremony. अब नेल्सन मंडेला सबसे पहला ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बनने जा रहे थे. तो ये सेरेमनी जो बहुत ही सुंदर एम्फी थिएटर था यूनियन बिल्डिंग्स का प्रिटोरिया में, वहाँ पर होने वाली थी, और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज सब मोर देन 140 कंट्रीज़ में से वहाँ पर आए थे वो सेरेमनी अटेंड करने के लिए. सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क, ही वॉज स्वोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, एंड देन थाबो मैकी, ही वॉज स्वोन इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद आया मैंडेलाज टर्न एंड ही वॉज स्वोन इन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री अफ्रीका, यू कैन से. Okay, now Mandela spoke how for decades South Africa was a seat of white supremacy. Now the presence of all people confer glory and hope to newborn liberty. The blacks who were considered as outlaws not so long ago were hosting the nations of the world on the soil. Their victory over apartheid was a common victory for justice, peace, and human dignity. Political freedom had been won. Now they would work hard to liberate all the people from the bondage of poverty,
deprivation, and diseases. Never would South Africa again face the oppression of one by another. Nelson Mandela was sworn in as the president of the Republic of South Africa, and बहुत सालों तक साउथ अफ्रीका वाइट्स माने ब्रिटिश पीपल जो है उनके अंडर में रही थी. जैसे कि वो लोग ने इंडिया पर अपना कब्जा जमा के रखा था, सेम वे ऐसे ही द सेम थिंग हैपेंड इन अफ्रीका ऑल्सो. और वो लोग को विक्ट्री किसके ऊपर गेन करनी थी? अपार्टाइड. नो, व्हाट इज अपार्टाइड एक्चुअली? अपार्टाइड वो है जहाँ पर स्किन कलर के ऊपर एक दूसरे से दूरी रखी जाती है और एक दूसरे से इनजस्टिस करी जाती है, एंड ऑल सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सेपरेटनेस, टू कीप पीपल सेपरेट. So naturally, the people in Africa were having black skin or dark skin, you can say, and the British had the white skin, which they considered very supreme, and they wanted to rule over there, and they never, उन लोग ने कभी भी जो white people थे उन्होंने black people को कभी भी उनके जो justice और जो उनके laws उनको follow कर रहे थे उन पर हमेशा कब्जा जमा के रखा और उनको नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते रहे. दो वो लोग साउथ अफ्रीका ब्लैक्स की सॉइल थी तो भी वाइट्स उस पर राज कर रहे थे. सो नाउ द विक्ट्री ओवर अपार्टाइड was a common victory for justice, peace and freedom. So these are all the things which Nelson Mandela was looking for. और उसने अब एक लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम के बाद उनको फ्रीडम मिला था, एंड नेल्सन मंडेला वॉज वेरी हैप्पी. ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. नाउ क्योंकि वो एक इनॉग्रल सेरेमनी थी, यू कैन से अ स्वॉर्निंग इन सेरेमनी थी, नेचुरली वहाँ पर एक बहुत ही स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले होने वाला था. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. देन देयर वाज अ स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले ऑफ जेट्स. South African jets and helicopters rode in perfect formation over them in the sky. It was also a demonstration of the military's loyalty to democracy, deprivation, and to the new government. The two national anthems were played. Now there are two national anthems because the old one is also there in Africa. Many people sing the old national anthem, and which is also called as Nicoli Sickle, I think, and they were all singing Die Stem from there. That is the old national anthem. You can look in the picture, there are the words of the old national anthem, and everyone was very happy and everybody was singing this song. And over here, because when Nelson Mandela was sworn in, so he said in his speech, बहुत सारे guests वहाँ पर थे, all over the world, everybody was watching Nelson Mandela on TV and such sort of things. It was May 10th, 1994, and that day in his inaugural speech, what Nelson Mandela said, "Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud." So everybody was waiting for his speech. All the Africans were so happy that Nelson Mandela had been sworn in. They were living in a free Africa now, and freedom तो मिल गई, पर इसके आगे बहुत सारा अभी भी काम बाकी था. They were considered a poor country, and they had lots of problems, so everything had to be solved. So you can see helicopters, there was a display of helicopters, a display of jets showing the colors of the national flag, the smoke. They left out the smoke of the national flag of Africa. Then there were troop carriers, and all these impressive display was there to be seen. और सब वहाँ पर दिख सकते थे, जेट्स थे जो स्मोक निकाल रहे थे. जैसे कि you can see in the picture, I have the picture of Indian jets where you can see the national flag of India. Say whenever we have the Republic Day celebrations या ऐसा कोई celebration हो, तब ये वाले jets
इस तरह से एक प्रेजेंटेशन इन द स्काई इम्प्रेसिव डिस्प्ले करते हैं स्काई में, विच इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। और वहाँ भी ऐसा ही डिस्प्ले हुआ जहाँ पर जेट्स ने अफ्रीकन फ्लैग के स्मोक का डिस्प्ले किया। उसके साथ हेलीकॉप्टर डिस्प्ले था और उसके साथ ट्रूप कैरियर्स का डिस्प्ले था, एंड ऑल वॉट एवर यू कैन सी which all whatever the military, all the people from the military were there with all their medals। हम लोग देख सकते हैं उनके मेडल्स वहाँ पर थे, उनके रिबन्स उनके यूनिफॉर्म पे थे। द यूनिफॉर्म्स वर सो लाइक impressive, and you can see all of them in the picture there। all the people over there were here, and they had trained a lot for this ceremony। और आज वो नज़ारा, ब्यूटीफुल नज़ारा पूरा अफ्रीका देख रहा था और पूरा वर्ल्ड भी उस नज़ारे को देख रहा था। एंड इट वॉज द सेरेमनी इन विच नेल्सन मंडेला was sworn in as the president of free Africa। It was a very big day for Africa, and all the people were really so happy for Africa. Now Nelson Mandela himself was overwhelmed with a sense of history. A few years after the Anglo-Boer War, apartheid was introduced in South Africa. The society based on racial discrimination was the harshest and most inhuman society in the world. Now, a new system based on the equality of all men, regardless of their color and race, had replaced the old and cruel system। So now नेल्सन मंडेला बहुत खुश थे कि एक्चुअली अगर हम लोग देखा जाए, if somebody's skin is white or it is brown, as we all Indians are called browns everywhere, or if it is black, does it make a person lower or higher than anyone else? Your skin color can be any type, but the bones and the blood which runs, bones, muscles, blood, all are the same in every being. Only the skin color differs. So nobody can be judged by the skin color of anyone, any person। तो स्किन कलर के ऊपर जजमेंट करना ये बहुत ही गलत बात है। I see in the classrooms also many students, when someone has a dark skin, they talk something or the other to them। So that is actually not good। You must always talk about the achievements of somebody। कभी भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में बात करें तो वो अचीवमेंट्स की बात होनी चाहिए, उनके नेचर की बात होनी चाहिए, उनका जो फ्रेंडलीनेस है उनकी बात होनी चाहिए, एंड वॉट दे एक्चुअली आर, नॉट वॉट गॉड मेड देम। God has made everybody with a special skin color, with a special brain, with a special heart. So nobody can be judged on the skin color. So apartheid usually stands, or that word stands for that skin color for which blacks were discriminated from the rest of the world because of their skin color. So now, what happened? The society based on racial discrimination was the harshest and most inhuman society in the world। इसका मतलब क्या है? जो भी हम लोग रेस के ऊपर, स्किन कलर के ऊपर किसी को जज करना, वो सबसे क्रूअल चीज़ है, इनह्यूमन। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड ह्यूमन एट ऑल। द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्लैक्स प्रोड्यूस्ड हीरोज लाइक Tambos, Sisyphus and others in South Africa। So we can say that जैसे कि हमारे इंडिया में जब हम लोग फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वी हैड सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीरोज एंड वी हैड सो मेनी पीपल हु फॉट फॉर आवर फ्रीडम, लाइक भगत सिंह एंड गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू एंड आवर सरदार पटेल एंड सो मेनी अदर पीपल। ओके, सो दे ऑल आर पार्ट ऑफ द फ्रीडम। वन मैन कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, वन मैन कैन बिकम द प्रेसिडेंट, पर उसके पीछे कितने लोग हैं who have suffered and who have fought for the independence of the country। So let us talk about some of the heroes of the African independence। So let's see, the decades of oppression and brutality had produced heroes like Oliver Tambo, Walter Sisulu, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukways, and so many other men. Some pronunciations might change because of the names in African. Okay, so they had extraordinary courage, wisdom and generosity.
that can never be seen again in anyone, and it requires much or such depths of oppression to create such heights of character. So what happens here? Because of all these people, जितना किसी को सताया जाए उतना वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ज़्यादा वर्क हार्ड करता है. सो यू कैन इमेजिन, ये जब ये सब लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे थे तो उन लोग की कंट्री में उनका हालत बहुत ही बुरी थी, बहुत ही ख़राब थी. और उस हालत में ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल में डालना, उनके संग मारपीट करना, द वाइट्स हैड हिट ऑल ऑफ देम वेल, पुट देम इन जेल एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स उन्होंने उनके ऊपर करे थे. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स, with all these problems also, these people never left what they had been fighting for. They were ready to fight and they wanted to make their country free. कैसे भी उनकी country उनको free चाहिए थी. And so at last, after so many years of struggle, at last on 10th of May 1994, we can say the new president Nelson Mandela, he was sworn in, and it was a very, very red letter day, you can say. It was a very big day for all the people in Africa. Now what he says over here again, apartheid created a deep and lasting wound in the people. The decades of exploitation and oppression of the black produced many heroes of extraordinary courage, wisdom and generosity. The greatest wealth of Africa was not in its minerals and diamonds, but in the men of such great character. So if you go to Africa, you can see, अगर आप पिक्चर में देखोगे तो आप देखोगे Africa is one of the richest countries in mineral wealth. It has diamonds, it has coal, it has what to say, सोना जो है, gold, और बहुत सारी इस तरह की mineral wealth जो है, वो सारी mineral wealth उसकी soil के नीचे buried थी. As Nelson Mandela क्या कहते हैं, My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. So he says, मेरी country इतनी rich है कि बहुत सारी चीज़ें, minerals, gold, diamonds and all such things you can get from beneath the soil. But what he preferred always, I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो वो अपने people of Africa को कहता है कि ये सारा जो भी मिनरल वेल्थ है जो सॉइल के नीचे है, उससे भी ज़्यादा मुझे वो लोग पसंद हैं जो एक्चुअली अफ्रीकन पीपल हैं, और वही अफ्रीका का सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है. क्योंकि वो लोग सबसे ब्यूटीफुल डायमंड्स, प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे और चमकते हुए सितारे जैसे हैं. सो दीज आर द पीपल who have built Africa and who are the people because of whom I am standing here. He is very you can say humble person. उसने बहुत सारा स्ट्रगल किया था, for he had to stay in prison also for so many years. फिर भी वो कहता है, वो क्या कहते हैं कि ये लोग मेरे को, they are the people actually who were responsible for the independence of Africa. So he gives more credit to them than to himself. Nelson Mandela learnt the meaning of courage from such brave comrades. Courage is the victory over fear. These comrades were ready to risk and sacrifice their lives for an idea, the idea of freedom and equality. Even in the darkest prisons, their hopes and faith were not broken. They never allowed the flame of struggle to be extinguished. So what he says over here, क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला, क्या कहना चाहते हैं मंडेला, कि ये सारे जो हीरोज़ हैं इनमें इतना करेज था, और उस करेज की वजह से हमें आज हम लोग को विक्ट्री मिली है, और हम लोग को जो डर के मारे हम लोग जी रहे थे, वो डर से भी हम लोग को आज़ादी मिली है. और इन सब लोग को कभी ना कभी प्रिजन में रहना पड़ा था, और उस प्रिजन में रहने के बाद उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए थे, रंग भेद हो रहा था वहाँ पर. फिर भी इतने डार्क प्रिजन्स में रहने के बाद भी ये जो लोग हैं, ऑल द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ अफ्रीका, देयर फेथ वॉज नॉट ब्रोकन. दे नेवर अलाउड द फ्लेम ऑफ स्ट्रगल टू बी एक्सटिंग्विश्ड. दैट्स व्हाट इज सेइंग. कभी भी उन्होंने फ्रीडम की स्ट्रगल का जो फ्लेम थी उसको कभी बुझने नहीं दिया.
Now, Mandela realized that not only was he deprived of freedom, but his brothers and sisters were also deprived of freedom. So, what he says in the lesson, you can see on page number 22, I was not born with the hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear streams that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man. So he says, मैं जब छोटा था तो मुझे पता ही नहीं था कि हम लोग फ्री है या नहीं है. एंड ही डिड नॉट नो व्हाट इज़ फ्रीडम, बट एज ही ग्रू अप, और जब वो उसको नहीं पता था जब वो फ्रीडम के बारे में, तो वो आराम से फील्ड्स में यहाँ वहाँ भागता. अपनी मदर की हट्स, यू कैन सी इन द पिक्चर्स द अफ्रीकन हट्स, तो वहाँ अपनी मदर की हट के आसपास जो फील्ड्स थी वहाँ भागता भागता दौड़ता, आराम से स्विम करता जो क्लियर स्ट्रीम्स थे उसके विलेज में, और आराम से जो उसको करना था वो करता वहाँ पर आराम से. एंड ही यूज्ड टू नॉट नो दैट ही इज़ नॉट फ्री. बट जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा तब उसको धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो एक्चुअली एक फ्री कंट्री में उसका बर्थ नहीं हुआ है. एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स ही थॉट कि आई मस्ट डू समथिंग एंड आई मस्ट somehow get my country free. And so he says, every man has twin responsibilities towards his family and for his people and country. If any black tried to live like a free human being, he was punished and isolated from his family and community. तो क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला कि अगर कोई भी ब्लैक पर्सन अपने फैमिली के संग रहना चाहता था या वो अपने फैमिली की तरफ अपना लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चाहता था, तो हमेशा ब्रिटिश लोग उनको अलग कर देते अपने फैमिली से और उसको फ्री ह्यूमन बीइंग की तरह रहने नहीं देते. तो ये सब देखकर व्हाट हैपेंड टू नेल्सन मंडेला, दैट वाज व्हाई ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. इट वाज हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल एंड द सेल्फ रेस्पेक्ट that totally transformed him from a weak young man to a bold one. A law-abiding lawyer was forced to become an outlaw. He realized that freedom is indivisible. So what happened here? जब उसने देखा ये अत्याचार और रंग भेद जो हो रहा था अफ्रीका में, तो वो उसको सहन नहीं कर सका और वहाँ पर एक बॉडी बनाई गई थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. उसको यू कैन सी इन द पिक्चर्स द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस that he joined. Nelson Mandela, he joined the African National Congress. क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसके लोग, अफ्रीका के लोग को फ्रीडम मिले और उनको सेल्फ रेस्पेक्ट. हमेशा अफ्रीकन्स को बहुत ही एक नो सेल्फ रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था. उनको कभी भी जैसे कि वो रियली ह्यूमन बींग्स हैं इस तरह से उनको कभी देखा नहीं गया था ऑल द वर्ल्ड से, मोस्टली फ्रॉम द ब्रिटिश. So he wanted that they should get the self-respect, and पहले वो he was a normal person like all normal people are. We and you are all normal people. but जब उसने ये अपने कंट्री में ये अपार्टाइड, ये रंग भेद और ये इनजस्टिस देखी तो उसको लगा वो he was a lawyer actually. He was a lawyer, and from a lawyer he was a simple person. He was a law-abiding lawyer. But from there, he was forced to become an outlaw. Outlaw means he started doing those activities which were correct according to him, but which were actually criminal according to the Britishers. So this is what he started doing, and उसके बाद उसने he was the law-abiding lawyer, but he was forced to become an outlaw. He realized that freedom is indivisible. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away somebody else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. So these are all the words which he said at the time. He said कि अगर किसी को फ्री होना है अपनी कंट्री में तो हिज डिज़ायर फॉर फ्रीडम और डिग्निटी ऑफ हिज पीपल
उसकी वजह से उसने रेबल किया, ही वॉज अ पार्ट ऑफ द रेबलियन यू कैन से, और उसके बाद उसको फ्रीडम मिली और उसको पता चला कि फ्रीडम ऐसी चीज़ है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज़ इनडिविजिबल, आइदर आपको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए या यू कैन नॉट हैव एनी फ्रीडम, यू कांट हैव हाफ द फ्रीडम. सो ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और उसके बाद ही वॉज वन ऑफ द हीरोज who was the first who was a person responsible for the freedom of Africa. You have so many quotes given by Nelson Mandela. He has given so many quotes. He was liked by all the people you can see in the pictures. He's with Michael Jackson, he's with Princess Diana, and he's with so many other important people over there. So he was a person and he was well loved by all the people all over the world. If you see one of his last quotes which I want to give you, never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. And these are his words for all the African people. And he says never again, हम लोग फिर से आज़ादी अफ्रीका की हम कभी नहीं छोड़ेंगे. And that was, he says that इस जो लैंड अफ्रीका है वहाँ पर हमेशा फ्रीडम रहेगा. And beautiful, actually, if you see the pictures of if I'll show you, I'll put some of the pictures of Africa. It's a very beautiful place. And he says God bless Africa. And that's all for today, and thank you so much all of you.